So as you all recorded है, कभी भी देखना, you can go back and see the concept. Okay, sir. Okay. Let's move to some new variety, right? I think you have at least quite a lot of understanding how to approach these questions. ये तो समझ में Hmm. आ गया, right? Yes, sir. Let's move to some new type of questions. And सब में ही एक standard formula की तरफ we have to move towards the standard formula, and that's about it. And let's now focus on some trigonometric type of questions, right? Where the functions which are given to you are trigonometric and your compound angle properties of sine A plus B and sine A minus B, etc., are not utilized. Okay, so what we are studying now is the integration of trigonometric functions, but with the help of your 11th standard knowledge. Okay. Okay, so integration of trigonometric functions, which you already know. Hmm. अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आपकी मेमोरी में रहें, क्योंकि you will see yourself that you can get struck if you forget them. tan का Okay. इसका उसका पता होना चाहिए. So let's say we have to integrate. देख के वैसे मालूम चल जाएगा sin 2x and cos 4x, okay, dx. So which form is this? Can you try this? If you break it down back to its compound form, which is you write it as 2 sin 2x cos 4x. So sine of 2x plus 4x plus sine of 2x minus 4x. So this is half sine cx plus, actually it becomes minus half sine 2x. Right? So this is how much? This is minus cos 6x upon minus 12. This is minus, this is become plus. So this is your answer. इसमें you see there is very little integration, more trigonometry. Hmm. Yes, sir. पहले trigonometrically solve करोगे, फिर you will reach a standard value and you can easily then get it. Yeah. Okay. So that's your answer. Integral. Now you Correct. try one and you can see इसमें करना कुछ नहीं है. You need to memorize your trigonometry pretty well. Okay. So let's say your question is sine 4x cos 2x and a sine 2x. And you know, finally you have to bring it to a single cos and a single sine, etc. Standard format. Hmm. These are standard, right? Yes, sir. Well, the only thing is coefficient दिया हुआ है एक जो denominator में आ रहा है. बाकी तो it's 3 trigonometric functions which are getting multiplied. Multiply. Try this out. So knowledge of trigonometry, you will see, is the level is going to increase now. Okay. Okay, break it down back to standard values. Continuously break it. The more you break it,
पिकअप एनी टू, क्योंकि आइडेंटिटी तो पेयर की होती है ना। Yes, sir. पहले दो को सॉल्व कर लो, फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा, वापस कंपाउंड बन जाएगा, और फिर उसको दोबारा तोड़ना पड़ेगा। ठीक. अंडरस्टूड द स्टेप्स दिमाग में? Yes, sir. हाँ, पहले तो दो, पिकअप एनी टू विच यू फाइंड कन्वीनियंट, फिर वो एक और कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसे भी तोड़ना पड़ेगा, दो दो बार फिर तोड़ना पड़ेगा। सो पिकअप एनी पेयर ऑफ योर चॉइस, कोई भी पेयर आपको इसमें से पसंद हो ना। आई लाइक साइन 4x एंड कॉस 2x। आई डोंट Hmm. लाइक साइन एंड साइन, बट Hmm. इट्स योर चॉइस, यू कैन पिक एनी। आइडेंटिटी तो चार ही हैं टोटल।
ठीक है. But now you have another sine 2x to tackle, right? Yes, sir. So you've broken it, but you have also need to write with it the other sine 2x, which will again get multiplied with these two. Into sine 2x भी करना पड़ेगा ना? Multiply by sine 2x. Do that also. And then multiply it, तो दो वाले फिर बन जाएंगे पेयर. If you take it inside, ये क्या बन जाएगा? Sin 6x sin 2x. Right? ठीक है. और ये बन जाएगा sin square 2x, which is more of 1 minus cos 4x. Multiple angle. हाँ. तो आ गया फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में. sin 2x sin 6x किससे आता है? cos से आता है ना? हाँ. cos of a minus b minus cos of a plus b. तो एक वो टूट जाएगा और एक sin square 2x जो है वो बन जाएगा 1 minus cos 4x by 2. उसमें 1/2 अलग और cos 4x अलग. Got it? Hope it is clear. तो ट्राई करता हूँ. Okay. ये वाला तो बहुत आराम से आ जाएगा ना. sin 6x sin 2x. You know what is this? Right. The other thing is, be very careful when you write this. You did not have a 2 here. Just see that you had no 2 here, right? So you multiplied with 2 and divide with 2, because the answer is 2 sin a cos b, right? हाँ. अच्छा. ठीक So है. you missed. So your half will always be there. समझ गया. Again introduce it because you have another 2, so it will become 1/4 out, right? तो मैं एक 2 और लगा देता हूँ एक्स्ट्रा. एक तो पहले से आया, अब दूसरे से आया, और अब व्हाट यू आर डूइंग इज एक आपने बना लिया और एक आपका आ गया sin square 2x dx. समझ. Now you know what is cos 4x equal to, right? It is 1 minus. So sin square 2x is actually 1 minus cos 4x by 2. Right? तो इसमें तो हाफ वो आएगा, वो वाला जो चल ही रहा है पीछे से, ये वाला, हाँ. है ना? और अब इसको ये तो यू कैन यू नो व्हाट इज दिस. दिस इज cos of a minus b into cos of a plus b, and you also know this, so you can substitute as half 1/2 minus cos 4x by 2 integral, right? This you will solve using cosine, and the right hand side open it independently. So एक तो आ जाएगा 1/4 का dx, एक आ जाएगा सिर्फ cos 4x by 4 का dx. cos 4x is also a standard format. Basically it is sine minus sine 4x by 4. और Yes, this sir. will come from your cosine. Just do it. एक बार लिख के देखो. So you are seeing gradually, suddenly this has got introduced. Trigonometry again. So it was a smart decision to do trigonometry. Yes, sir. Hope this is getting clearer. We are doing integration of trigonometric functions, therefore your base of trigonometry is strong. ठीक है. लिखो, चलो पूरा लिख लो. Bring it to an end.
Where are you stuck? तो ये ठीक है, दिस इज फाइन। एक इंटीग्रल ये हो गया, एक इंटीग्रल ये हो गया, एक +1/4 हो गया, और एक -1/4 cos x। ये तो कट गए cos दोनों, 4x, ये तो कट भी गया। हाँ, तो यू जस्ट लेफ्ट विद दीज टू, cos 8x माइनस एंड 1/4 और ये इसका cos x का क्या होता है? -sin 8x/8। 8. Tell me if you have any doubts in your mind. नहीं, Which part do you find difficult? Integration or trigo? integral. Okay. That means you need practice there. Yes, sir. ये तो कट गया ना, सो दिस इज पूरा गया ना ये तो। भाई यहाँ पे भी तो 1/4 cos 4x ही आ गया था। ये तो So this, खत्म हो गया, हाँ, तो why this 1/4 then? और मैंने वो दो बार लिया। Right? Understood? Plus c. हम्म, And x also, right? 1/4 dx मतलब x. Integral of 2 dx is 2x. Integral of 1/4 dx is x भी लगाना है साथ में। If you ठीक, just integrate dx, it is x. हम्म, समझ, ठीक है? Okay, it takes time, but okay, let's say you already had a good glimpse of, so let's say you have to integrate now, and you know it also, right? अगर trigonometry याद होगी, it's simple. So integrate cos cube x dx. Obviously, your target is to bring it in the standard format, right? हम्म, No, cos 3x, if you remember, cos 3x, cos 3x की फॉर्म पूरा याद है? Do you remember it? यस सर, Cos cube x को लिखते कैसे थे? If you remember that, it's one line. ठीक है,
एक लाइन में आंसर आ जाता है if you know the formula. These are standard, right? These are standards. Hmm. One liner. Minus cos x, ठीक है? 1/4 sin 3x, ठीक है? समझ आ गया? Yes, Okay. sir. Let's give you another one. Do for sin cube x also. Okay. क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सडनली द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. Hmm. छोटे छोटे हैं, क्योंकि जेई मेंस में तो ये दे विल नॉट आस्क यू दिस, राइट? बट इफ यू नो दिस, you will see these getting used. ठीक. These are small steps, but they are very useful to you. Hmm. Very small, right? Sin cube x, you know the formula, you just, but you seeing the level of trigonometry is going to go. Okay. Now do for cos of 4x. Think through this. How will you bring it closer to? How will you bring this closer to the standard?
The hint makes sense to you? There are two ways I have done it. One, I have taken cos square whole square, right? And then I've converted it to, so I can write this further as, so I'm using trigonometry. ठीक है. What is this? This is 1 plus cos 4x. ये तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ही. So I just need to do an integral. सब बन गया ना मेरा. So I've got 1 by 8 and 1 by 4. Then I have cos 4x dx plus, okay, ये तो हट गया था. So this is cos 2x factor. This is straightforward. This is cos 4x. This is cos 2x. So my main aim was to get rid of power of 4 क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं है. So I'm just bringing it to the multiple angles. पहले first time I changed it to double, then I changed double to 4. The other way is I can split this as cos cube x, जो मुझे मालूम है. अभी ऊपर करा था हमने cos cube x को. So I will get 2 cos and a cos outside. I will multiply with this and do cos A cos B, again split them. यहाँ cos आ जाएगा ना, cos 4x 3 cos x, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो cos A cos B दोबारा बन जाएगा. और cos A cos B की फॉर्म तो मुझे पता है क्या होती है. Make sense? Yes, sir. Right? ठीक है, you will get exposed धीरे धीरे. You will see many questions. It will get ingrained in your mind कि यार finally ये cos 4x cos 2x बड़े काम की चीज है. Now what you do is you try this. Okay, so this time what you do is
अच्छा। मल्टीपल एंगल का बहुत यूज हो रहा है हम्म, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। स्क्वायर हटाएं कैसे? एंगल डबल करो, cos 2 थीटा को यूज करो हर जगह पे। अच्छा, यू डू दिस, ओके। अच्छा, यू मेड इट साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, नॉट बैड। So you can see for yourself why your trigonometry needs to be very good. हाँ। इंटीग्रल तो इजी पार्ट है। हम्म, गॉट इट? ये समझ में आ गया? हाँ आ गया। ओके, लेट्स मेक योर लाइफ मोर टफ। हम्म, इंटीग्रेट।
इनकी अपनी तो फुल फॉर्म्स पता है ना? हम्म। दैट इज वन वे टू अप्रोच इट। दूसरा वही है जो ऊपर करा था, मेक इट साइन 2x, बट दिस टाइम साइन 2x क्यूब बना लो। 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1/8 और 8। देर आर मल्टीपल वेज यू कैन डू द सेम क्वेश्चन। मे बी यू वांट टू यूज कॉस क्यूब क्या होता है और साइन क्यूब क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी दोनों लिख दी, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करा, और फिर हर एक को कॉस है साइन बी साइन है कॉस बी के रूल से ब्रेक करके एक लंबी सी आइडेंटिटी बना ली। अच्छा। यू नो कॉस क्यूब ऑल्सो, हम्म। you know sine cube also. Either use that or you can use your trick, which is sine 2x. अगर sine 2x का होल क्यूब बन गया तो वो साइन साइन 2x की फॉर्म में आ जाएगा ना। 1/8 से डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, हाँ। अभी जैसे ऊपर करा था, समथिंग लाइक दैट। हम्म। और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 8। एनी डाउट्स? ओके। तो बोर्ड चलना बंद हो गया? नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नहीं, बोर्ड चलना बंद हो गया। आई एम एडिंग वन मोर पेज, सेकेंड पेज। नहीं चल रहा था। ओके, लेट्स वेट। कम टू पेज 2। उधर ही
ओके, तो इस क्वेश्चन को लिख लो. चलिए ठीक है. जरा सा बोर्ड. ओके, यू वांट टू डू इट हियर ओनली, डू इट हियर. तो हाँ अब चलिए. ठीक है. Yeah, this step looks good. So make it 2 sin 2x तो बना ही लो सबको. See, remember, you know trigonometry, and the clarity of trigonometry is this becomes what? This becomes finally this is sin 2x का whole cube, right? यस सर. And you know the formula of sin cube x. क्या फॉर्मूला लगाया था ऊपर? क्या आइडेंटिटी होती है sin cube x की? साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स. sin 3x हम्म माइनस 3 साइन एक्स. -4 3 ये होती है sin 3x की, sin cube x की. You used it. ये होती है. ये क्या लिखा है? 3 sin x minus 3 sin x. I think this was sin 3x here. वो माइनस साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होगा. हाँ, तो याद आ इसको गया. ठीक कर लो. So what is this? इसको ठीक कर लो, correct it. So you know what is cube, right? Sin cube. हाँ. So ये भी तो sin cube ही बना लिया. यस सर. So why don't you just use angle as 2x instead of x? But the property you are using is sin cube x only. Cube ही तो है sin का. ठीक है. Just be very careful now. Your angle is 2x, not x. So जो भी आप एंगल यूज करो, डबल यूज करना. ठीक है. ठीक है. Theta is 2x, so 6x. So it's a good revision of trigonometry also. So lesson learned, please do trigonometry practice. यस सर. इसमें इंटीग्रेशन तो इजी वाला पार्ट है, बट वो कन्वर्ट करना इधर से उधर, कन्वर्ट करना. वो दैट इज बिट कम्बरसम. बट ट्रिग्नोमेट्री में प्रोफिशिएंसी है, इट इज नॉट दैट हार्ड. अब तो स्प्लिट हो गए dx में अलग अलग. यस सर. आ गया आंसर. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, if you see this question, if I put cos x is equal to t,
और साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, वट एवर जो भी डालना चाहो. सो दिस विल बिकम माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट? Yes, sir. सो इफ यू नोटिस दिस इज साइन क्यूब एक्स, सो साइन एक्स इसमें से एक ले लेता हूं मैं, तो वो डी टी बन जाएगा. हाँ. एक साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा, एक तो यूज कर लिया ना डी टी बनाने में, हम्म. ये वाला. ठीक है, ठीक है. साइन स्क्वायर एक्स को कैन आई राइट इट एज cos square x is equal to t square, sin square x is equal to 1 minus t square. हम्म. What is cos cube x? cos क्यूब एक्स का t फॉर्मूला तो cube बन अपन गया. हाँ, ठीक है. So this becomes t cube dt minus t 5 dt. Put the value of t back. So cos 4 by 4 minus cos माइनस 6 कॉस by. आ गया आंसर. ठीक है. More elegant, right? ये स्ट्रेट हाँ. फॉरवर्ड नहीं है. और ट्रिग्नोमेट्री के, if you see the values of sine and cosine together, especially the odd multiples, odd numbers, it's bit easy to solve it this way. Okay, Yes, sir. and let me give you one more so that you also understand कि अगर हर बार trigonometric function लगाना मतलब may not be very fruitful. So let's say you're doing sine cube x cos 7x dt, right? Both are odd, powers are odd. साइन 3x. कोई भी डाल दो. एस टी डेरिवेटिव अवेलेबल है ना. देखो साइन का डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, कॉस का डेरिवेटिव भी अवेलेबल है. अभी ऊपर जैसे मैंने कराई है दिस वन. अच्छा. This is more of substitution method. हम्म. Because in these, if you try to apply the trigonometric cos 7 में trigonometric function लगाने की कोशिश करी, this will become way too long. बहुत लॉन्ग हो जाएगा. So instead of using trigonometry, we're using algebraic substitution. T में convert कर रहे हैं. तो इसमें टी में किसको Put convert anything, करें? किसी को भी डाल लो, दोनों से आ जाएगा. You can put, if you want to have a thumb rule, बड़े वाले को डालो जिसकी पावर ज्यादा है. ठीक.
क्योंकि वो T7 डायरेक्ट बन जाएगा ना. हम्म, No, not this. You are putting cos 7 only. सिर्फ this. You're putting T as this. That's all. अच्छा. वो तो T7 सब्स्टिट्यूशन पे होगा. टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स. ठीक है. sin x dx. ठीक है, हो गया. सो यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल. इसको ये sin x इसमें मिल जाएगा और एक sin स्क्वायर x आ जाएगा. sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर x. साइन, वो तो साइन का तो क्यूब में है ना. हाँ, बट उसमें से एक यूज कर लो ना यहाँ पे. दिस इज dx बाय द वे. ओके. ठीक है. सो आई एम सेइंग यू राइट दिस एज sin x dx. जो डेरिवेटिव आया वो अलग लिख दिया. फिर अच्छा. आ गया साइन स्क्वायर x. फिर आ गया cos 7x dx. हम्म. तो ये पूरा क्या बन गया? माइनस dt. ये क्या बन गया? एक sin x dx यूज कर लिया ना dt में. समझ गया. दूसरा साइन स्क्वायर x ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर. हम्म. इससे निकाल लिया. ठीक है. डाल दिया. इसको ओपन कर लो. समझ गया. स्ट्रेट फॉरवर्ड. इंटीग्रेट. पुट द वैल्यू बैक. If you use the other method, this will become way too long. Okay? हम्म. So कई बार आपको judiciously सोचना पड़ता है whether I will go for a method of substitution, which is standard method, then going with trigonometric functions only, which can be difficult. Yeah, so let's say you have to do an integral of one more question. Let's do. Okay. One minus sine squared theta. Okay. And ये तो खैर cos squared theta ही हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है. Okay. Okay. Divided by sine 6 theta cos theta d theta. So some questions may lure you, attract you that you use trigonometry, ओके. but they may be hidden formats of substitution because किसी चीज का डेरिवेटिव ऑलरेडी नजर आ रहा है उसके अंदर. हम्म. So don't always jump for trigonometric functions. Always make a choice कि वो cos 2x cos 4x वाला बढ़िया रहेगा. लेकिन जनरली इफ यू सी द पावर बहुत बड़ी हो जाती है ना जहाँ पे, हाँ. देयर सब्स्टिट्यूशन वर्क्स वेल. कौन करेगा ये 7? हाँ, वो तो दिक्कत है. मतलब कितनी बार कितना cos क्यूब x cos क्यूब x, फिर हम्म. cos क्यूब x की एक्सपेंशन को 2 बार मल्टीप्लाई, फिर उनको cos x से मल्टीप्लाई. दैट इज वेरी लेंदी. यस सर. That's a call you need to take, and that will come from experience. एक थंब रूल ठीक तो है. दिख ही रहा है कि if it's too long,
Can you see derivative of something being available? ये 1 - sin² 2 थीटा। नहीं 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 है. अच्छा, Just now you have the derivative. ये तो सीधा cos² थीटा का हो गया क्या? फॉर्मूला। किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है? See, if you notice, this is again substitution. Sin थीटा को वो डाल दो. See, complexity कहाँ पे आ रही है? बहुत बड़े एक्सप्रेशन में ना. So if I put sin theta is equal to t, take derivative of both the sides. What happens? cos² बन जाएगा। क्या आ गया फिर? मैं इसको समझ ठीक। अच्छा, क्लियर हो गया। ठीक है। बढ़िया. समझ यस आया? सर। हाँ। डेरिवेटिव दिया हुआ था, बड़ा बहुत ही विजिबल था, बहुत ज्यादा ब्लेटेंटली. कहीं छुपा नहीं हुआ था वो. समझ गया। Okay. So this is my suggestion to you now. What you need to do is please do some practice, ओके सर। right? So I think this is more than enough. I think if you digest this, you have done many questions today again. The flavor was more trigonometric, but I then started introducing the substitution method also. क्योंकि प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं बोर्ड में, बट इफ यू गो फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू विल फाइंड दैट substitution does get used as a method. अच्छा, तो यू ठीक है। लाइक जैसे आपने लोगैरिथमिक सीख लिया, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक सीख लिया, एक्सपोनेंशियल सीख लिया, इनवर्स सीख लिया, वो तो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हो गए ना. बट व्हेन इट कम्स टू मेथड, द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज गेटिंग यूज्ड एवरीवेयर. चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लोगैरिथमिक हो, डालना तो पड़ता है किसी ना किसी को टी के हाँ। बराबर, यस सर। है ना. So this was just to, we'll continue to practice like this, but ठीक है। but take time out to do some practice of your own. ओके। ठीक है, चलो, have a ठीक है। good day and enjoy.